हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू प्रेपनेशंस। आप सब जानते हैं कि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बिहार जुडिशरी के फॉर्म्स ओपन हो रहे हैं, 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ नो टाइम इज लेफ्ट। प्रीलिम्स की डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, बिहार एपीओ की भी प्रीलिम्स की डेट अनाउंस्ड है। अब जैसे बिहार एपीओ की हमने टेस्ट सीरीज प्री और मेंस को ओरिएंटेड रखी थी, वैसे ही बिहार जुडिशरी की प्री बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और ये आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही लॉन्च हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर टेस्ट को ऐसे डिजाइन किया जाएगा ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती चली जाए, ठीक है। और वही टॉपिक्स एड्रेस किए जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उन्हीं एरियाज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है रेगुलरली। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट our YouTube revision series has already been begun। आप जानते हैं सारे टॉपिक्स एड्रेस किए जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको एक स्ट्रैटेजी आपके लिए शेयर किया लास्ट वीडियो में, आप अब रेगुलर अपने आप को टच में रखिए, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। कई ऐसे एरियाज होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। वन लाइनर्स, लाइक बिहार का एक पैटर्न है कि आपसे वन लाइनर्स बहुत पूछेंगे, और ऐसे वन लाइनर्स होंगे जो कन्वेंशनली हम नहीं मेमोराइज करते। वी यूज टू मेमोराइज आर्टिकल्स, सेक्शंस, केस लॉज, जजमेंट, सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे वन लाइनर्स आते हैं, ऐसे पैराग्राफ आते हैं, ऐसे सेगमेंट्स आते हैं जो कभी कोई सोच नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज preamble। ओके, नाउ फॉर द preamble, अब जैसे कई स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रेनाउंड ज्यूरिस्ट के, आपके जजेस के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ which is the who said that article 32 is the heart and soul of the constitution, or what which part of the Indian constitution is heart and soul of the constitution, right? Whether it is article 32, whether it is preamble of India, no, constitution of India, or which is the heart and soul. Now you have to define it, you have to define it। अब जब आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसको डिफाइन करते हैं, आप उसमें स्टेटमेंट्स मेमोराइज करते हैं। वो इक्वली प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा जाता है आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज फोकस ऑन दैट। ओके, सो नाउ हाउ द preamble was framed, when it was passed, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू का, सब कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। preamble आपके कोर वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फिलोसफी को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, each and every word of the preamble, for example, sovereign, socialist, secular, democratic republic। now it is important, आपको MCQs कई बार ऐसे आ जाते हैं जहां पूछ लेते हैं कि whether this is a part of the constitution, which statement is correct। तो सोवरेन हटा देंगे, डेमोक्रेटिक हटा देंगे, रिपब्लिक हटा देंगे। कई बार होता है जल्दबाजी में आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। Here comes the role of solving more and more prelims question before entering the examination hall। You have to address each and every point। जितने questions गलत करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप जब भी रिवीजन करें, आप पूरी पोथी पट्टा लेके नहीं बैठ जाएंगे रिवीजन करने के लिए। आप क्या रिवाइज करेंगे? अपने रॉन्ग एमसीक्यूज को। आप क्या रिवाइज करेंगे? अपने रॉन्ग एरियाज को, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, evolution of the preamble, how it started, right? It started with the speech of Jawaharlal Nehru ji with the objective resolution। now he has introduced the language, he has introduced the preamble for on the first date. Which date? 13 December 1946। which is the date? 13 December 1946। okay, and then what is the next date? 4 July 1947, when B.N. Rao presented the draft of version, राइट। प्रियम्बल का पूरा ड्राफ्ट आपका ही रिप्रेजेंट कौन सी डेट को हुआ था? 4 जुलाई 1947। अब ये जो डेट्स हैं, ये कई बार मेमोराइज नहीं करते हैं या फिर इसको नजरअंदाज कर देते हैं, और यही एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, आपके प्रीलिम्स में एक एज देते हैं। नोबडी मेमोराइजेस दीज थिंग्स। क्वेश्चंस में आ गया सब याद करेंगे, प्रियम्बल की लैंग्वेज, सब बेसिक चीजें, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यू हैव टू मेमोराइज दीज डेट्स। ओके, more and more questions you will attempt, you memorize उतने ही जल्दी हो जाता है।
Next, on 22nd January 1947, what was first debate? Like formally adopt किया गया जब proper एक debate हुई कि whether this preamble has to be accepted, has to be adopted or not. So it was adopted on 22nd January 1947. Then as you all know, 26th November. Now what is 26th November? 26th November क्या है? 26th November specifically is also known as Constitution Day, or previously it was known as Law Day. Now it अब एक और क्वेश्चन इससे बनता है, on which date 26th November 1949 was decided to be, or 26th November was decided by Honorable Prime Minister of India that this date will be considered or will be taken from this date as a Constitution Day. ये dates भी important है, ये भी important है, ठीक है? और which date has been decided, ये भी important है. Okay, next 26th January we all know that is Republic Day, when the Constitution came into effect. Okay, these dates are very important with respect to preamble. Next, now what are the components of the preamble? It is a source of power. What is the source of power, right? अब वो source of power कहाँ से आ रहा है? We the people of India thyself give this constitution, right? हम खुद को ये constitution दे रहे हैं, तो sovereignty किससे derive हो रही है? Sovereign. अब यहाँ से एक question बनता है कि sovereign power, who is the sovereign authority in this? तो sovereign कौन है? People of India. How do you know this? You know from the language of the preamble itself. Okay, then ideals of the state. What are the ideals of our Indian constitution, or what is the ideal of our country? Sovereign, socialist, secular, democratic, republic, right? So this defines the character. अब ये question एक किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, what are the ideals of the Indian Constitution? और उसमें sovereign, socialist, secular, democratic, republic तो लिखा है, लेकिन नीचे none of the above है. अब यहाँ पे कई लोग ideals of the state, वो preamble से related question नहीं पूछा, ideals of the state पूछा है, तो none of the above select कर देते हैं, ठीक है? तो वहां पे आपने अपने क्वेश्चन को गलत कर दिया, राइट? वहां पे आपने वो एक एज, एक सिंगल मार्क्स से प्रीलिम्स रह जाता है, तो वो एक सिंगल मार्क्स आपने लूज कर दिया. सो यू डोंट हैव टू लूज इट. ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये एरियाज. आप ऐसे ही कंपोनेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल और द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल, दीज पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड एंड रिटन इन योर आंसर्स आल्सो, राइट? नेक्स्ट, what now, these are the ideals. These ideals are being followed for the aspiration of the people. And what are the aspiration? Justice, liberty, equality and fraternity. And date of adoption abhi humne upar kiya 26 November 1949, and effect is from 26 January 1950. Okay, now ideals of the state. Ideals of the state wo what अभी हमने पिछले स्लाइड में किया, that was sovereign, social, secular, democratic. अब now what does sovereign means? Sovereign means what? The supreme authority, independent and supreme authority, right? उसी within boundaries के under. तो who is the supreme authority or who is the sovereign? This is the people of India, ठीक है? Who is the highest authority? Who is the high? ये सारे single line, one liner questions आपको memorize हो जाने चाहिए. जितने क्वेश्चंस अटेंड, बार बार मैं आप लोगों को दोहरा रही हूँ, जितने क्वेश्चंस आप अटेंड करेंगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में ये सेटल होंगे. दैट सोशलिस्ट, व्हाट सोशलिस्ट मींस? इट रिफ्लेक्ट्स कि क्या रिफ्लेक्ट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक बैलेंस बनना चाहिए. देयर शुड बी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. और यही सेम प्रिंसिपल कहाँ पे एनश्राइंड है? या के डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, that there should be equal distribution of resources. Article 36, 37, 39 ये बहुत important articles है, right? It defines how what important role it plays. Okay, then secular, it also means that there is no official state religion, but it also means that there is a freedom of conscience of the religion, right? कई बार होता है secular means state religion, state has no religion, options में आ जाएगा. No, there is a freedom of conscience and religious practice. There is a freedom. The people can choose what religion they have to follow, what to which community they want to belong, to what profession they want to follow, right? Then democratic, it is by, for and of the people. ठीक है? अब ये भी स्टेटमेंट आएगा. अब by, for, of the people किसने ये दिया था? इस तरीके के कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं है ये जनरली हम लोग देखते भी नहीं, आप लोग देखेंगे भी नहीं, उसको रिवाइज भी नहीं करेंगे. लेकिन हाँ, ऐसे ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. आप कहेंगे ये क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन अब यही क्वेश्चंस हैं जो आपको एच पे लेके जाएंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस है. ये टॉपिक्स भी बहुत इजी है, ये सब्जेक्ट भी बहुत इजी है, बस आपको मेमोराइज करना है, राइट?
नेक्स्ट, नाउ व्हाट वाज द जज, ठीक है, अब हमने ये कर लिया व्हाट इज द आइडियल, ठीक है, आइडियल के बाद जस्टिस फ्रेटर्निटी, पर्पस क्या है, उसको कवर कैसे करना है आपको, राइट, तो देयर इज जस्टिस, लिबर्टी, equality and fraternity. Through these steps, through these objectives, these are the objectives that ideals have to be covered. Now justice of what? Social, economic, political justice through equal opportunity and fair distribution of fundamental rights, right? अब आपको political justice हो गया, आपका economic justice हो गया, ये social justice हो गया, these have different jurisprudential essence. These every justice have different jurisprudential essence. आपको इसको conceptually जब आप मेंस के आंसर में लिखने के लिए जाएंगे तो उसको अलग तरीके से एड्रेस करना है, प्रीलिम्स के लिए आपको वन लाइनर रिवाइज करना है. लिबर्टी फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, एक्सेट्रा. इक्वालिटी of status and opportunity. And fraternity is what? Unity, that is brotherhood, right? Brotherhood among the people. Next, moving on to next. Now preamble is part of the constitution or not part of the constitution, where various judicial interpretation has been made. Now 3 landmark cases there, many other landmark cases are also there, whether it is a part of non-Golaknath case is also there, your Shankari Prasad is also there, Sajjan Singh is also there, whether it is a part of the constitution or not, whether it can be made or not, right? First case, Berry Union 1960 was there, Supreme Court held that it is not the part of the constitution, but in Keshavanand Bharati it was overruled that yes, it is an integral part of the constitution, and yes, amendment के भी यहाँ यहीं से question बन जाते हैं, yes, it can be amended also until and unless the basic structure is being violated. And what is that basic structure? We have already done in our detailed class कि basic structure किसको कहा जाता है and कैसे identify करना है whether the basic structure is being violated or not violated. Okay, then in LIC of India case, LIC case 1995 reiterate किया that yes, it is an integral part but directly enforceable नहीं होता. Enforceable कैसे होता है? Through the different application, different parts application of our Indian Constitution. Okay, now moving on further. Preamble, social, secular and integrity. Amendment, 42nd Amendment Act in the preamble. अब preamble में कितने amendment हुए हैं? एक या दो? That is a point, right? अब यहाँ पे हो जाता है 44th भी तो आया है ना? 42nd भी तो है मैम. अब you have to be clear, you have to see each and every amendment in your constitution, what word has been added. Socialist, secular, integrity, these words were they have been added, and based on these were added based on the recommendation of the Swarn Singh committee. Okay, 42nd Amendment Act, and it is a very significant amendment act. It is also known as mini constitution. Okay, these are the one liner questions that you have to revise through your preparation. Okay, now let's practice few questions. First question, the preamble to the Constitution of India is, first, it is a part of the constitution but has no legal effect. है कि नहीं? It is part or not? Not a part of the constitution and has no legal effect. ये तो बिल्कुल ही गलत. Legal effect, why it is not? It is the face of a constitution, it is the identity of a constitution, right? Now third, it is a part of the constitution and has the same legal effect as any other part, or it is a part of the constitution but has no legal effect or independently of other parts. Yes, as a whole it is being seen, right? Independent नहीं है, दो इसका लीगल इफेक्ट है बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट बट येस इट हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट. ओके, सेम इफेक्ट preamble, but yes, you cannot go to the court for challenging the preamble of the constitution, right? Why? Because it is the index of the constitution, it has to be followed, so there's no independent effect, right? Next, question 2, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the constitution? Now you all know the answer. Liberty of thought is there, expression is there, belief is there. Now जब हमने अभी ऊपर किया था what kind of liberty, right? Liberty of freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Now see, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं. अब वहां पे आप कहेंगे कि मैम इकोनॉमिक लिबर्टी भी है. नो, इट इज नॉट इकोनॉमिक लिबर्टी, इट इज व्हाट? इट इज इकोनॉमिक जस्टिस. सो एक एक टर्म, एक एक फ्रेज को आपको ध्यान से करना है, ठीक है? सो व्हाट इज दिस? इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट देयर. ओके,
नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? इसमें से किसमें है? Means intention of the legislature, intention of the makers of the Constitution. पूरा किसमें दिया हुआ है? That is your index, that is your preamble, that is face of the Constitution of India. Okay, so option 1 is the correct answer. Next, economic justice as an objective of the Indian Constitution has been provided in where? Economic justice किसमें प्रोवाइड किया? अभी हमने प्रीवियस किया. इकोनॉमिक जस्टिस आपका डीपीएसपी में भी प्रोवाइडेड है, प्लस प्रीएम्बल में एक्सप्रेसली दिया है दैट इट इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव. It is a major objective justice, which is economic justice, that is being given, and there should be the equal distribution of the resources that has already been expressly given in directive principle of state policy. Okay, now we have done with our short revision of the preamble. Okay, इसी तरीके से आपको सिंगल वन लाइनर्स को रिवाइज करते हुए चलना है, उनको रिवाइज करना है, साथ ही में अपने PYQs को भी अटेम्प्ट करना है. जल्द ही आप सबके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो जाएगी और आप टेस्ट सीरीज रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा, रेगुलरली लगाइएगा और अपने रिव्यूज भी लीजिएगा. साथ ही साथ जो आपके मेंस के भी और ऑनलाइन कोर्स आपके प्रीलिम्स के भी टेस्ट चल रहे हैं, उनके रेगुलर रिव्यूज जरूरी हैं, प्रैक्टिस जरूरी है और एप्लीकेशन भी जरूरी है. ओके, सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन करिए एंड क्रैक इट दिस टाइम. थैंक यू सो मच.